set for the second informal summit between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping. Prime Minister Modi tweets, "May this informal summit further strengthen ties between India and China." Mamallapuram bears testimony to ancient ties between the two neighbours. Vice President M. Venkaiah Naidu holds delegation-level talks with President of Comoros, Azali Assoumani. A number of agreements signed between the two countries. Finance Minister Nirmala Sitharaman says government is in talks with and is doing everything in its capacity to resolve their grievances. Says it is open to all suggestions in this regard. In Uttar Pradesh, 7 members of a family killed when a bus rams into a group of sleeping pilgrims near Narora, Bulandshahr this morning. Chief Minister Yogi Adityanath expresses grief over the incident and announces compensation of Rs 2 lakh for the kin of the deceased. The UN Security Council fails to agree on a statement on Turkey's counter-terrorism operation in Syria. US and Russia veto a statement by 5 European members, France, Germany, Belgium, Britain and Poland, condemning the operation. Turkey continues military operation against Kurdish targets. Indian captain Virat Kohli hits double 100 as Indian batsmen consolidate on day 2 of the Pune test against South Africa. Hosts nearing the 600-run mark. Aims to win the test series to break Australia's 10 test wins record. Hello, you're watching DD News and I am Preeti presenting the bulletin. First, we'll begin with news from the informal summit in Mamallapuram. Germany's Berlin. Chinese President Xi Jinping arrived in Chennai for his historic second informal summit with Prime Minister Narendra Modi. He reached at Chennai airport in a special aircraft where a red carpet welcome was accorded to him. Tamil Nadu Governor Banwari Lal Purohit and Chief Minister E. Palaniswamy received him at the airport. As a mark of welcoming him, cultural teams gave performances at the decked-up airport. Prime Minister Narendra Modi has already reached Mamallapuram. President Xi Jinping will be reaching Mamallapuram by road around 4 p.m. where he will be received by Prime Minister Narendra Modi. Both the leaders will visit UNESCO heritage sites listed places like Arjana's Penance, Panchrats and the Shore Temple. Later, both the leaders would witness a cultural performance by the artist of Kalakshetra Foundation of Chennai in the backdrop of the Shore Temple. Before winding up the day's events, Prime Minister Narendra Modi would host the dinner for the visiting dignitary at Shore Temple premises. Tomorrow, Prime Minister Modi and President Xi will have a one-on-one meeting followed by delegation-level talks. Being an informal summit, both the leaders would engage themselves in open and candid talks touching upon several subjects of bilateral, regional and global importance.
At a special dinner hosted by Prime Minister Modi in honor of Chinese President in Mamallapuram this evening, the choicest of Indian culinary delights will be on display. The special focus on the evening will be to showcase diverse cuisines of South India. From Thakali Rasam to Archavita Sambar, from Kadalai Kuruma to Kavanarasi Halwa, the menu on offer will reflect the sweeping diversity of South Indian culinary traditions. From Chettinad to Karaikuri, regional cuisines will be represented at the Chinese President's dinner table tonight. All right, Amrit Pal Singh is joining us from Mamallapuram. Amrit, in a while from now, the visiting dignitary Chinese President will embark upon a road trip to Mamallapuram, and he will reach there in the evening where the Prime Minister will receive him. Let us know, is the stage all set there to welcome the Chinese President? That's right, Preeti. The stage is all set to receive the Chinese President here. Prime Minister Modi will himself be receiving the Chinese President when he arrives in Mamallapuram or Mahabalipuram at about 5 this evening. In a little while from now, he will start from Chennai and take the road route there to Mahabalipuram. Mahabalipuram is all decked up. It's spruced up. There are flower decorations all over the place. Huge arches have been constructed. In fact, all along the 55-kilometer stretch, there will be cultural performances at about 34 odd places. So about 350 children and cultural performers are expected to perform along that East Coast road, which President Xi and his entourage takes from Chennai to Mamallapuram. But before we come to Mamallapuram, let me give you a sense, get a sense from my colleague Abhishek Jha, who was there at in Chennai. He's just arrived in Mamallapuram. Abhishek, tell us what the situation, what the mood in Chennai was when President Xi touched down at the Chennai International Airport. So Amrit, I was there since morning, and since morning there were many troops of dancing folks who were all dressed up in the traditional dresses, and Tamil dancers they were? Mostly, I think they were representing different parts of this state, okay. And they were all dressed up, and there were school children who were performing some dance forms here. And while the interesting part was when President Xi arrived and he landed on the ground, so he took time. He observed the different groups performing, and he encouragingly he waved hands to them, and that was something that these people who have been there since morning, that was kind of gesture that okay, your performance is much appreciated, and something that I'm also that is appealing to me also. So that was one thing that was quite noticeable at the airport. And how was the city like? Was it like a clamp down, lot of security, lot of personnel, security personnel, or were people out on the streets to catch a glimpse of the Chinese president visiting their city? Okay, yesterday when we arrived in the city, Chennai, so quite a traffic jam it was. Today, most of the routes, connecting to airport and going from the airport to Mamallapuram and this city, the traffic diversions have been very much in place. The people have been told way more in advance. So I don't think there was much of chaos. So there was kind of, and of course there was a security blanket. I believe there are like multi-layered security arrangements where an entry has to be checked and reconfirmed by so many people at multiple stages, and then only somebody could reach to that. Right. Now you've taken the East Coast Road. You've just driven down from Chennai to Mahabalipuram. Give us a sense of what it was along the road. Oh, it was wonderful. The beautiful road that goes along. The East Coast Road is so beautiful. Runs all along the east coast of India. The Bay of Bengal that you see pretty behind us is what you see right now, and it's a beautiful road. Tell us how it was decked up. So I could see the groups of people. There were after each kilometer, I believe after some distance, there were people who were eagerly waiting for the arrival of Chinese president, all decked up again in their traditional clothes. So is the police allowing the local villagers and people living along the roadside to come up to the road and catch a glimpse
of the visiting dignitary? The police have made certain barricading that after a certain point people could not go to the road. But the arrangements are so well in place that even though there are security measures, very strictly implemented, people could come and they can greet President Xi. And I hope when President Xi will be traveling for this 50 kilometers road along the sea, so one side he'll be seeing the sea, and the other side there will be sea of people welcoming President Xi. Yeah, that's very beautifully put. Thank you, Abhishek. If I could request my colleague Arendra, who is along with me here in Mamallapuram for the past 2 days, to get a sense of how Mamallapuram is decked up. ये बताएं कि कल शाम आप और मैं यहाँ शहर मामल्लापुरम और महाबलीपुरम में जा रहे थे और देखे ये जो यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स हैं, लिविंग मॉन्यूमेंट्स हैं, तो आपको क्या लगा? और आप ज़रा वर्णन करें हमारे नाजरीन के लिए कि मामल्लापुरम कैसे डेक्ड अप है प्रेसिडेंट शी को वेलकम करने के लिए। अमृत, जैसा आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, अपने आप में भारत और चीन के संबंधों के लिहाज से अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण के तौर पे है। जिस समुद्र के आगे हम लोग खड़े हुए हैं, ये वो समुद्र है जहाँ पे एक बंदरगाह हुआ करते थे, पोर्ट्स हुआ करते थे, जहाँ से चीन के अलावा अन्य देशों के साथ में व्यापार हुआ करता था। उसके प्रमाण आज इतिहास में देखने को मिलते हैं। जहाँ तक बात यह है कि उस समय की जो भव्यता थी, कई चीज़ें इतिहास कागज़ों पे लिखे जाते हैं, कुछ इतिहास पत्थर के पे तराश के लिखे जाते हैं। पत्थर पे तराश के लिखे गए इस इतिहास की एक तरीके से बुलंद इमारत के तौर पे ये कह सकते हैं मामल्लपुरम, जहाँ पे भारत की 5वीं, 6वीं, 7वीं और 7वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पे मौजूद है, जिसमें कहीं ना कहीं इस बात का दर्शाया गया कि भारत में उस वक्त इस प्रकार की उत्कृष्ट कला थी जिसका दुनिया आज लोहा मानती है, और यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको शामिल किया हुआ है। जहाँ तक रही बात राष्ट्रपति शी के स्वागत के लिहाज से, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर लेते हैं। प्रीति को मैं एक बात बताऊं, प्रीति आपको अर्जन्स पेनेंस करके एक जगह है, एक साइट है, वो ये जो रॉक है कृष्णास बटरबॉल, उससे बहुत करीब है और दोनों लीडर्स वहाँ तक चल के जाएंगे। वहाँ पर डिपिक्शंस हैं एनिमल्स के साथ, पर एक भी एनिमल को ना मारा जा रहा है ना काटा जा रहा है, वो सब वहाँ उस एक ही रॉक पर स्कल्पचर्स हैं 7th सेंचुरी एडी के। तो किस तरह नॉन वायलेंस आपके कल्चर का इंटीग्रल पार्ट रहा है, मेरे ख्याल से इसका सिंबलिज्म, द सिंबलिज्म ऑफ दैट इज ऑल्सो अ मैसेज दैट इज गोइंग आउट टू प्रेसिडेंट शी एंड थ्रू हिम टू द वर्ल्ड, दैट हाउ ओल्ड civilizations like China and India are engaging, but India stands for those values. And after that he goes takes the Chinese president to Panchrath, which is basically 5 chariots, and then to the shore temple where the cultural performances are there. Would you want to Arendra talk about the cultural performance in the evening? What a setting it would be. We were there at 5 p.m. yesterday, 6 p.m. yesterday. The kind of gentle sea breeze that blows from the Bay of Bengal, and it would lead to the perfect mood and setting for what you're trying to achieve, that informal atmosphere of serious talks but in an informal atmosphere. बिल्कुल अमृत, मैं आपकी इस बात पे मैं जवाब दूंगा। उससे पहले जो बात आप प्रीति को दर्शकों के तक पहुंचा रहे थे, उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो कृष्णा बटर बॉल है अपने आप में एक अजूबा कह सकते हैं कि एक पत्थर के ऊपर एक बहुत बड़ा एक पत्थर ठहरा हुआ है, गोल सा 1300 साल से खड़ा है। बिल्कुल, और ये अपने आप में प्रकृति का या कहा जाए नेचर का हमको एक तरीका है बताने का कि आप बैलेंस कैसे बना सकते हैं। कई बार हमको लगता है कि कुछ बहुत बोझ है हमारे ऊपर, चाहे वो हमारे आपसी रिश्तों का बोझ हो या कई प्रकार की समस्याओं का अगर हम बोझ मानते हैं, लेकिन कैसे उसके साथ एक बैलेंस बना के हमको आगे बढ़ना है या उसके साथ में हमको अपना आपको कोएग्जिस्ट करते हुए आगे चलना है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि नेचर का एक बहुत बड़ा उदाहरण के तरीके से है दुनिया के लिए भी कि आप कैसे बैलेंस बना सकते हैं इस प्रकार की एक ट्रिकी सिचुएशन के लिहाज से। मैं उसमें वो जोड़ना चाहता था। आपने जो बात की कि कल्चरल इवेंट के लिहाज से आज शाम को जो कल्चरल से पहले मैं आपको एक जाती सवाल पूछ लेता हूँ। बैलेंस आपने बड़ी अच्छी बात की, पर आप जब वो कृष्णा बटरबॉल के फीट पे कल पीस टू कैमरा करने की कोशिश कर रहे थे, डर लग रहा था कि कहीं पत्थर गिर ना जाए आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे डर नहीं लग रहा था। रीजन ये है कि जिस पत्थर को बहुत सारे हाथी एक साथ मिलके हिला नहीं सके, तमाम राजाओं ने कोशिश की उसको हटाने की, वो हटा ना सके। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने कोशिश की, जब वो हटा ना सके, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई जो हटा ना सके, तो मेरी मौजूदगी उसको हटा ही नहीं सकते, ये तयशुदा बात थी। तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। हाँ, एक आश्चर्यचकित भाव के साथ में या फीलिंग के साथ में उसको देख जरूर रहा था कि आखिर ये नायाब नमूना दुनिया का जिसको प्रकृति ने हिंदुस्तान को दिया और यहाँ ये देखने को मिल रहा, दुनिया भर से लोग उसको देखने को आते हैं। आप जो कल्चर रिलेशन की बात कर रहे थे, जो आज शोकेस करते हुए पीएम मोदी एक तरीके से राष्ट्रपति शी को नजर आएंगे, खूबसूरत से शोर टेंपल के उस परिसर में जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि लगभग 25 मिनट का कार्यक्रम रखा गया है
5-6 अलग अलग प्रकार की जो नृत्य विधाएं हैं, जो डांस परफॉर्मेंस है अलग अलग तरीके की, उनको उसमें शामिल किया गया है। जो ये दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, यहाँ की जो अलग अलग प्रकार की जो सांस्कृतिक नृत्य कलाएं हैं, उनको एक तरीके से प्रदर्शित करेगा। और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है, उसमें इस संदेश को जोड़ा गया है जो शांति के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। उस संदेश के साथ में वो कल्चरल इवेंट खत्म होगा जब आज शाम को हमको वो कल्चरल इवेंट देखने को मिलेगा। तो अपने आप में एक बड़ा एक मैसेज भी है उसमें। हम अपनी जो एक भव्य विरासत है सांस्कृतिक, उसका मुजाहिरा भी कर रहे हैं, हम उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इस बात को भी दिखा रहे हैं कि भारत कितनी सारी विविधताओं के साथ में, एकता के साथ में रहता है। ये न सिर्फ भारत के लिए एक मिसाल है, बल्कि दुनिया के साथ के लिए भी एक मिसाल है कि हम इतनी विविधताओं को अपने साथ समेटे हुए हैं और दुनिया को इसके बारे में हम दिखा रहे हैं। और आज उसका नज़ारा राष्ट्रपति शी भी देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी उसको एक तरीके से कल्चरल, जो एक तरीके से बहुत बड़ा हमारी विरासत, उसको दिखाते नजर आएंगे। Cultural diplomacy and soft diplomacy. In fact, Preeti, let me tell you that the function has been put together by India's premium cultural group, the Kala Kshetra, that was set up by Rukmini Devi Arundel in 1936. So it's going to be an elaborate cultural evening for President Xi. And after that, there's as you were mentioning the various dishes that are going to be put out. The diverse cuisine of Tamil Nadu is going to be put up. तो ये आरिंदर बड़ा नयाब उनके लिए कल्चरल एक्सपीरियंस होगा प्रेसिडेंट शी के लिए और उनकी अंतर्राज के लिए। 8 लोग उनकी जो डेलीगेशन है उनमें से और 8 लोग हमारी डेलीगेशन में से, भारत की डेलीगेशन में से, जिसमें प्रधानमंत्री तो ऑफ कोर्स लीड कर ही रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव और तमाम आला अफसरान विदेश मंत्रालय के, उनकी ओर से उनके स्टेट काउंसलर्स, पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स, उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी साहब और लीड ऑफ कोर्स शी जिनपिंग साहब कर ही रहे हैं। तो एक बड़ा बेहतरीन इवनिंग होगी जहां पर वो उस मूड को सेट किया जाएगा और वो एक कुजीन तमिलनाडु की टेस्ट कर सकें। और खास करके तमिलनाडु का तो बहुत पुराना रिश्ता रहा है चीन के साथ, जैसे आप ट्रेड की बात कर रहे थे, और फुजियान प्रोविंस स्पेशली जिसके शी साहब गवर्नर हुआ करते थे राष्ट्रपति बनने से पहले। बिल्कुल। और आप अगर देखें, चीन और भारत अपने आप में दो एक बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं और इन सभ्यताओं की अपनी एक बहुत बड़ी विरासत है। और ये विरासत जो शब्द अपने आप में एक महज 4 अल्फाज नहीं है, विरासत सांस्कृतिक है, खान पान की भी है, पहनावे की भी है, भाषा की भी है, संस्कृति की भी है। जब आप विरासत को एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं, एक्सचेंज करते नजर आते हैं, उसका एक दूसरे से प्रदर्शन करते नजर आते हैं, तो आपको वो कई प्रकार के आयाम होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का इस पूरी विजिट को हिस्टोरिकल या यादगार बनाने के पीछे कोशिश यही है कि हर वो लम्हा, हर वो चीज जो प्रधानमंत्री जो उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ये कि हर तरीके से एक अलग अंदाज के साथ हो। वो चीज हमें कुजीन में या खान पान में भी देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के ऐसे बहुत से परंपरागत खान पान जो सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी सदियों पुराने अपने उस टेस्ट को, उस महक को, उसकी जो एक खुशबू है, उसको जो बरकरार रखे हुए हैं, वो राष्ट्रपति को, शी को तक वो पहुंचाएं। तो कम से कम ये एक वो कोशिश है, क्योंकि जब ये छोटी सी बात होती है, आप बेहतर समझते हैं कि फॉरेन डिप्लोमेसी के लिहाज से सिंबोलिज्म एक चीज होती है। जब राष्ट्रपति शी इस प्रकार के व्यंजनों को चखेंगे तो इसकी चर्चा चाइना में भी होगी, इसकी चर्चा दुनिया में भी होगी। तो भारतीय व्यंजनों की चर्चा अगर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हो रही है तो लोगों के अंदर एक उत्सुकता पैदा होती है और लोग यूं ही उसको खाना या उसके खाने के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। तो ये भी एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश के तौर पे कहा जा सकता है कि जब वो सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो ये भी एक तरीका होता है कि आप अपनी जो विरासत है, चाहे वो खान पान की ही विरासत क्यों ना हो, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए एक बात बताएं, आप वुहान में थे जहां ये पहली समिट हुई, वहां पर राष्ट्रपति शी ने इनको चाय पिलाई प्रधानमंत्री मोदी को। इन्होंने तो केतली उठा ली थी, इन्होंने कहा कि देखें मैं भी चाय बेचता रहा हूँ। जैसे उनको वहाँ पे वुहान में चाय पिलाई थी, आज ये इनको इडली, डोसा और चेटिनाड चिकन और हलवा और रसम खिलाएंगे, तो रिवर्स हॉस्पिटैलिटी होगी। बिल्कुल, ये वो मौका है जिसका जिक्र आपने वुहान में जिक्र किया। वुहान के जिक्र में इस बात को फिर से कहूं कि जब आपने चाय का जिक्र किया, तो जब राष्ट्रपति शी ने प्रधानमंत्री मोदी को चाय ऑफर की थी, तो चाय अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, भारतीय राजनीति के लिहाज से भी उसका जिक्र उन्होंने वहां पे भी किया था। लेकिन सिर्फ चाय नहीं है वो, चीन की संस्कृति को आप भी बेहतर से समझते हैं कि गर्म पानी के साथ में वहाँ की जो नेचुरल हर्ब्स हैं, उस पानी को खाना पीना या उसको अपने डेली रूटीन में यूटिलाइज करना, जिससे उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें उन्होंने उसको समाहित किया हुआ। तो जब वो प्रधानमंत्री मोदी को चाय ऑफर कर रहे थे तो एक तरीके से वो भी चीन की संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रख रहे थे। इसकी चर्चा उस समय भी बहुत हुई थी। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी उनको भारतीय व्यंजनों को एक तरीके से सामने रखेंगे तो निश्चित तौर से वो तस्वीरें क्या बयां करेंगी, क्या वो खुद
आगे बढ़ के वो जेस्चरिंग के साथ में उसको सर्व करते नजर आएंगे या इस प्रकार की कुछ तस्वीरें होंगी, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मोदी अपनी गर्मजोशी और खुश मिजाजी के साथ में मिलने के लिए जाने जाते हैं, तो शायद एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भले ही हो, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी जरूर हो सकती हैं जो हम जिसके बारे में निश्चित तौर पर चर्चा बाद में करेंगे कि देखिए साहब इस तस्वीर के आखिर मायने क्या है। This khush So mijazi absolutely, and Preeti, this it will be dinner diplomacy, culture diplomacy at display in a very elaborate fashion All right, in yes. this beautiful historic city of Mahabalipuram. Yes, this khush mijazi is evident in the conversations you had with Abhishek and Arendra, and very aptly, very beautifully, interestingly, you three put it to our viewers how important this day could be for the leaders when they meet today. Thank you so much as of now for joining in. We'll come back to you again once the visiting dignitary there reaches Mamallapuram. As of now, thank you for joining in. So that was our correspondents joining us from Mamallapuram, giving us an insight as to what all is planned for the Chinese president today evening. In a short while from now, the Prime Minister will embark on a road trip to Mamallapuram. He will be received by the Prime Minister Modi there, and the informal summit between the two leaders will begin. Remember, it's a two-day summit. Today will be the cultural extravaganza, which will be a treat for the Chinese president, and tomorrow the two leaders will sit for business. Delegation level talks will be held tomorrow. As of now, that's it in this edition of the news. Thanks for watching. Bye-bye.